everyone for this next edition of Market Review between me and Raju. So let's get down to what happened last week. So it's very clear Nifty is still in an uptrend, and apart from the small consolidation over the last couple of days, it might have broken out, which we had expected that there will be a consolidation. So that is what is happening, and that is also seen on the VIX chart, which is going down. So there is no fear for the market right now. It is also clear from the VIX EOD chart. There is no uptrend in it yet. On the point and figure chart, on the daily chart, we had the breakout which we had talked about, a double top by yesterday. In fact, it closed above 17,767 for the first time, and now this 18,162 count remains open as long as the double bottom sell is a bit far off. So this is not a tradable setup as far as futures is concerned, but it only means that Nifty is bullish, and maybe on an intraday chart, whenever you get a good setup, you can go long. Not otherwise, of course. This is the intraday setup which we had discussed, how it gave a few whipsaws in the consolidation phase, and after that it has become bullish above the cloud, and now it is quite bullish, and the stop loss for the positional intraday strategy is now below 17,780. So that is how we are saying that you can use the EOD setup and then trade based on intraday. So of course, if it goes below 17,780, this intraday setup is likely to get bullish. So you have to wait to get a further bullish setup. Similarly, on Bank Nifty, it is extremely bullish. We had also said that Bank Nifty is likely to has been outperforming, is likely to outperform, and that is true even now. Even after this week, it is still showing bullishness. On a hourly chart also, it is still bullish. My only concern, Raju, was on this hourly chart of today of Nifty. If you see here, जो morning high था, that has not been crossed convincingly at all. जो first opening hour का high है, so that can be a resistance. So we have to see what happens. That was about 17,946 on Nifty spot, Nifty futures. So as long as Nifty is below 17,950, we might again see some pullback or a consolidation. So of course, on an intraday chart, like we have explained, so that is what can be traded. So intraday चार्ट में जो यानी मस्त के नीचे जब तक नहीं आता है तब तक चार्ट बुलिश है, क्लियर है। हाँ, तब तक तो बुलिश ही है। तो एक्जेक्टली, सो पॉसिबल है कि वो हो सकता है कि कुछ रिट्रेसमेंट हुआ हो या कुछ ऐसा। तो एनीवे वीकेंड भी था, तो मे बी वीकेंड का इफेक्ट हो सकता है। तो वी हैव टू सी व्हाट हैपेंस फ्रेश ऑन मंडे, बट एज ऑफ नाउ निफ्टी इज स्टिल बुलिश। और राजू, ये जो बुलिशनेस है, ये मतलब दिस इज समथिंग विच इज बेस्ड ओनली ऑन द निफ्टी चार्ट, बट जो एक मैक्रो व्यू के लिए जो एक सिस्टम है, वो क्या है, जरा बताइए। सो यहाँ पे यानी आपको ये तो ऑल एसेट क्लास जो है, जैसे अगर गोल्ड अगर हम देखें, कमोडिटी जो बॉन्ड हुआ या यूएसडी आईएनआर करेंसी का जो होता है, सो उसको हम लोग अगर कंपेयर करते हैं, सो ये जो चार्ट आपको दिख रहा है, सो ये गोल्ड अपॉन निफ्टी है। ये सब आरएस चार्ट है, आरएस चार्ट, ओके। और ये बॉन्ड अपॉन निफ्टी 50 यूएसडी आईएनआर, gold upon Nifty, then GS composite upon Nifty, USD INR upon Nifty, and then Nifty 50 का है। तो ये हो गया कमोडिटी, ये हो गया आपका बॉन्ड, और ये हो गया करेंसी, और ये हो गया इक्विटी, यानी बेंचमार्क अगर हम ये पढ़ते हैं। सो जब भी अगर जनरली क्या होता है, इनवर्स सिचुएशन जो दिखता है। सो आप यहाँ अगर आप देखो इस चार्ट को थोड़ा सा हम ये करते हैं। सो ये फर्स्ट टाइम एमए के अगर सिंपल देखें, बुलिश बेरिश सेटअप, करेक्ट, डबल बॉटम सेल बिलो मूविंग एवरेज, डबल टॉप बाई अबव मूविंग एवरेज। सो ये मूविंग एवरेज फिल्टर ट्रेंड फिल्टर। तो इसका मतलब ये है कि गोल्ड इज अंडर परफॉर्मिंग निफ्टी और निफ्टी इज आउट परफॉर्मिंग गोल्ड। ओके, सो अगर गोल्ड अंडर परफॉर्मिंग स्टार्ट जो हुआ है ऐसे कॉलम ऑफ एक्स से ही, लेकिन इस पॉइंट पे अगर हम देखें, सो समथिंग ये तो बेरिश एंगल कॉलम है, बाद में 5 जुलाई से यानी हो गया था। तो और वहीं पे अगर हम निफ्टी का चार्ट देखें, सो ये एंकर कॉलम अगर आप देखो 8 जुलाई से यहाँ से निफ्टी से आउट परफॉर्मेंस, जब भी निफ्टी का एंकर कॉलम हुआ तभी गोल्ड का अंडर परफॉर्मेंस शुरू हुआ।
और गोल्ड हुआ, यूएसडी आईएनआर हुआ और बॉन्ड, सॉरी यूएसडी आईएनआर हुआ और बॉन्ड हुआ, तीनों अंडर परफॉर्म और करेंटली अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। और करंट फॉर्मेशन अगर हम देखें तो सॉर्ट ऑफ एबीसी फॉर्मेशन हुआ है ये दोनों में, यानी बॉन्ड और यूएसडी आईएनआर में। इसमें ऑलरेडी एंकर कॉलम फॉलो थ्रू है। अगर ट्रेंड ये यानी अदर एसेट क्लास का ट्रेंड अगर कंटिन्यू होता है सो दैट विल बी गुड साइड फॉर इक्विटी मार्केट। ओके, सो बेसिकली ये जो आरएस का चार्ट है दैट हैज टू बी प्लॉटेड ऑन 0.1% बॉक्स साइज and you can save this as a session for all these 4 charts together. So in just one chart you get an idea what the market is about. Of course this is a slightly broader view, not for a very small term trade, but at least whether we are bullish or not itna to samajhta hai. In fact you can see from this charts that when Nifty was bearish it was exactly the other way around on these charts. Exactly. सो ये एक हो सकता है जिससे आपको आउट परफॉर्मेंस समझ में आएगा कि किधर आपको ट्रेड करना चाहिए। तो लास्ट वीक वी वर हियर ऑन 2nd of September when we had said that auto has been outperforming till that time, but now it has given a bearish formation with respect to Nifty, and this whole week it was underperforming auto. So as long as it is below the red cloud, Nifty auto is likely to underperform Nifty 50. But at the same time, what can outperform? So there was an interesting move today in many IT stocks. So we just changed the numerator from Nifty Auto to Nifty IT. So now what you are going to see is this chart of Nifty IT versus Nifty 50. In fact, we had mentioned here on 2nd that this has been a very bearish trend over the last many days, weeks actually. And yes, 7th September here, this was the first time it went above the cloud. After that the cloud became green, and now you saw the outperformance today when almost all IT stocks were what 3, 4, 5% up. So currently अगर हम देखें तो ये यानी मस्ट के ऊपर है। सो ये सॉर्ट ऑफ बाई सिग्नल है, आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है निफ्टी आईटी का। सो ये हो गया यानी इंडेक्स आउट परफॉर्म कर रहा है। हाँ, मतलब अभी इतना तो पता चला है कि विच सेक्टर इज बुलिश। Exactly. So now how to identify within that sector which stocks one should trade? So मैंने इसी वीडियो में यानी फर्स्ट या सेकेंड इसमें मैंने कवर किया था आरएस अल्टीमेट मैट्रिक्स। तो सिंपल मेथड है, उसको अगर हम गए अर्जुन यहाँ आरएस अल्टीमेट पीएनएफ आरएस मैट्रिक्स और ग्रुप यहाँ इन द स्कैनर जस्ट सिलेक्ट अल्टीमेट पीएफ आरएस मैट्रिक्स and then select IT index and scan. Within a few minutes, not even 1 minute, maybe it gets scanned because IT group is not a very big group, and then you get all the scores of all the IT stocks which are there in the IT index. Then you have to sort it to see which is the highest score, right? So TKM अगर हम देखें तो highest score है, it's 9. अगर इस पे क्लिक किया तो TKM का चार्ट ओपन हो। ये तो बहुत बुलिश है। करंटली अगर आप देखें आप सो ये देखो मस्त के ऊपर ये पूरा बाई, उसके बाद नीचे ये सेल, और अभी फर्स्ट टाइम फिर से बाई दिया है। सो उसके बाद का कोई भी फॉलो थ्रू अगर यहाँ पे है ईओडी चार्ट है, राइट? ईओडी चार्ट है 0.25%। मतलब यहाँ पे अभी इमीडिएट करंट प्राइस पे एंट्री लेना माइट बी रिस्की बिकॉज़ स्टॉप लॉस इज फार अवे। सो अगर स्टॉप लॉस अगर अफोर्डेबल है, बिकॉज स्टॉप लॉस जो है वो सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव ही रहता है, पर्सन टू पर्सन वैल्यू। किसी के लिए 50 रुपए लॉस होगा, किसी के लिए 100 रुपए भी या फिर। हाँ, सो अगर आपके लिए अफोर्डेबल स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं है, सो वेट फॉर द नेक्स्ट फॉलो। बट इन एनी केस एज लॉन्ग एज दिस इज ग्रीन क्लाउड, दिस स्टॉक एंड सेक्टर इज बुलिश, दैट इज व्हाट इट इज। अनदर इंटरेस्टिंग चार्ट इसका एलटीटीएस दिखा। एलटीटीएस, ओके। हाँ, सो ये भी एबीसी ब्रेकआउट भी लग रहा है। सो ये सॉर्ट ऑफ यानी एबीसी ब्रेकआउट होगा अगर 45 डिग्री ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर जाता है तो स्टॉप लॉस अफोर्डेबल है। इसको एक चीज कर सकते हैं कि जैसे वी शोड फॉर निफ्टी ईओडी एंड निफ्टी इंट्रा, सेम थिंग कैन बी डन फॉर दीस स्टॉक्स कि जो इंट्राडे में जिसको बाय सिग्नल मिलेगा मे बी पॉइंट, ऑफ कोर्स फॉर निफ्टी इट इज 0.05%, फॉर स्टॉक्स इट विल बी 0.15%। अगर 0.15% में कोई भी बुलिश सेटअप मिलता है अगर एलटीटीएस और टेकेम इन्फी एलटीआई, तो ये ट्रेड ले सकते हैं, आपको वेट करने की जरूरत नहीं है ईओडी का। लेकिन अगर मैं पोजिशनल ट्रेडर हूं तो
1.15 के हाँ रेकमेंडेड नहीं है, सो ईओडी का आप ये हो गया आईटी। और एक सेक्टर जो थोड़ा सा आई फेल्ट कि उसमें वीकनेस आ सकता है, दिस इज निफ्टी एफएमसीजी। This is about, in fact, it has already given a sell signal, but actually it was not strong at all. Or if you look at the last few weeks, after this downtrend, it gave a small pullback, and now it has given a further sell signal. So maybe on the bearish side, you can look out for FMCG stocks. Of course, the main stocks are HUL and ITC. ITC has been going up and up and up, and today I think it closed near 330, but it has come down from today's high. So maybe HUL or ITC on the short side, and maybe one of the IT stocks on the long side. So this can be the trade for the next week. So this is a good strategy to identify first which sector is performing more compared to Nifty, and then identifying a stock within that sector, and then trading that based on an intraday chart. So I hope we hope you have liked this Market Guru video, and definitely we would like to have more comments from viewers and more suggestions, more questions. So please keep them coming, and please share and like this video and subscribe to it. So like everyone knows, we have our market conference next weekend, 17th and 18th September, DECMA in Pune. So both of us, in fact all of us, will be busy right from Friday onward. We are always in fact anyway busy in that, but Friday onwards we will be at the venue. So it will not be possible for us to record the video next week, Market Ruburu, but maybe वहाँ पे रूबरू कर सकते हैं। बिल्कुल वहाँ पे ही हम लोग लाइव करेंगे रूबरू। सो जो भी अगर वहाँ आते हैं, सो मार्केट रूबरू हम लोग लाइव के साथ ये करेंगे। Okay, so otherwise those watching on YouTube, you will have to wait for one more week after next, and those who are attending DECMA, we will definitely be very pleased to discuss these charts with you over the weekend next week. Thank you. Thank you.